वेलकम बैक टू कोड टू कोटेक्स। आज हम करने वाले हैं गूगल ऐप स्क्रिप्ट एक्सेस गूगल शीट्स मैप्स एंड जीमेल इन 4 लाइंस ऑफ कोड। सो क्लिक स्टार्ट लैब। देन नेक्स्ट हम गूगल शीट्स को ओपन करेंगे इनकॉग्निटो विंडो में। क्लिक आई अंडरस्टैंड। हमारे पास स्प्रेडशीट यहाँ पे ओपन हो चुकी है, तो हमें यहाँ पे वापस जाना है ऑन टू द टास्क वन। हमें सबसे पहले A1 में जाकर कोई भी स्ट्रीट एड्रेस डाल देना। फॉर एग्जाम्पल 76 9th एज न्यूयॉर्क। मैं इसी को कॉपी करके वहाँ पेस्ट करने वाला हूँ। तो ब्लैंक स्प्रेडशीट पे हमें क्लिक करना है। ये रहा A1। I will paste it here. Right. एड्रेस पेस्ट करने के बाद I have to click check my progress is completed. On to the task 2, we have to open app script. So come back here, click extensions, then app script. Then यहाँ हमें कोड लिखना है. So we have to edit the template with this. So copy this. Replace it completely. And यहाँ पे हमें अपना ईमेल डालना है, जो कि यहाँ पे यूजर ईमेल हमें प्रोवाइड किया गया है स्टूडेंट का. So इसको हम रिप्लेस कर देंगे. नेक्स्ट हम यहाँ वापस आएंगे. To restrict this app to access to only sheet you're working with, you have to add this annotation as a file level commit for the peace of mind of your users. Okay, you have to save the project to drive. You have to name the project. For example, we will add this name, Hello Maps. After renaming, okay, it's done. Now, task 4 here is to run the Google Sheet Maps and Gmail app. It is already set as send map. Then click run. Click review permissions. Click select all. Continue. Authorization successful. Execution is completed. हमें executions में जाना है. Click view dashboard. Here it is. Next, you have to click the open Gmail button on the left side panel. You can just simply come here and click on Gmail. So completed. On to the task 5, the app a detailed explanation. However, you don't have to do this. So congratulations, this lab is complete. If this video was helpful, give it a like and subscribe our channel for more such videos. You can just simply end this lab.